हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द यूजेज ऑफ द कंपैरेटर इन पाइथन। सो बेसिकली कंपैरेटर या कस्टम कंपैरेटर क्या है? ये एक टेक्निक है या ये एक कॉन्सेप्ट है यूजिंग विच वी कैन टेल द इनबिल्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन व्हाट पैरामीटर बेसिस आई वांट टू शॉर्ट द गिवन एरे ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। For example, if I have an array 3, 9, 1, 2, 0, 6, 4, and if I say a dot short and then if I say print a, then if I run this, so python 3 comparison dot py, you can see it will sort in naturally ascending order. But what if I want to sort the array elements on the basis of some other condition? For example, I want to sort them on the basis of the units place value in ascending order, or I want to sort them in descending order, or I want to sort the array elements in ascending order on the basis of modulo 3 value. For example, here a modulo 3 value will be what? 0, 0, then 1 modulo 3 is 1, 2 modulo 3 is 2, 0 modulo 3 is 0, and 6 modulo 3 is 0, and 4 modulo 3 is 1. What if I want to sort on the basis of this? सो सबसे पहले मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 वाली वैल्यूज आएगी, फिर मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 1 वाली वैल्यूज आएगी, फिर मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 2 वाली वैल्यूज आएगी. Then in that case I can make use of a comparator. So there are two ways if you go on, there can be a lot of different ways if you keep on doing small change, but we are going to look at two ways. सबसे पहले अगर सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर की के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, देन सिंपली टेल द की वैल्यू हियर. सो की इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स गिवन एक्स मॉड्यूलो 3. So in key you pass a lambda function which takes one parameters and it will return the value. So basically this will be the key for all the array elements. So for every x, x modulo 3 will be its key on the basis of which it will sort in ascending order. So now if you run, you can see first I have 3 which is modulo 3 0, then I have 9, then I have 0, and then I have 6. All of them have modulo 3 0. Then 1 and 4 which have modulo 3 1, and then I have 2 which have modulo 3 2. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये 3906 का modulo 3 तो 0 है, बट इनका ऑर्डर 3906 कैसे आया? So whenever modulo 3 value is same, whenever this key value is same, then it will retain the natural order of the original array. For example, original array में 3906 ऐसे ही आए होंगे, सबसे पहले 3, फिर 9, फिर 0 एंड फिर 6. तो पहले सारी वैल्यूज आएगी जिनका मॉड्यूलो 3 0 है, फिर वो वैल्यूज आएगी जिनका मॉड्यूलो 3 1 है, एंड फिर वो वैल्यूज आएगी जिनका मॉड्यूलो 3 2 है. अब जिनका वैल्यू मॉड्यूलो 3 0 है, वो सारी वैल्यूज में भी वो नेचुरल ऑर्डर में रहेंगे अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल एरे. ओके, एंड आई कैन पास वन मोर पैरामीटर हियर, आई कैन से रिवर्स इक्वल टू ट्रू. तो अब क्या होगा? मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 2 वाली वैल्यू सबसे पहले आएगी, फिर मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 1 वाली, एंड देन मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 वाली. तो ये एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस की वैल्यू. अब ये तो तब हो गया जब आपकी सिर्फ एक की है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉट इफ आई वॉन्ट टू शॉर्ट दैम in descending order? Of course I can simply write reverse equal to true, but let's say I want to sort them in ascending order on the basis of units place value. For example, ये 34 है. Okay, let's take a separate array. Okay, so I'll just remove this and I'll say b is equal to 43, 56, 90, 34, 25, 21, 48. I want to sort them on the basis of the units place value. Okay, so of course I can write x modulo 10, and but whenever see I want to sort them on the basis of units place value. Sorry for that. So I can definitely write like this, because x modulo 10 will be the units place value, and if I print it, it will give me on the basis of units place value, right? So first I have 90, then 21, then 43, and so on. But what if I have multiple values with the same unit value, units place value? For example, 48 and 28 both have 8 in the units place value, right? So whenever two or more numbers have the same value at the units place, I want to sort them in naturally ascending order. अब जैसे 48
बाय डिफॉल्ट मुझे सारे एलिमेंट्स को यूनिट्स प्लेस के वैल्यू के रिस्पेक्ट में असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, बट अगर दो एलिमेंट्स में यूनिट्स प्लेस की वैल्यू सेम है देन आई वांट टू शॉर्ट देम इन नेचुरली असेंडिंग ऑर्डर. सो यहाँ पे 28 पहले आएगा फिर 48. So one of the other ways to do is I can use here compare to key, and here I can pass a function. Now I can also write a lambda function here, but here I'll write a separate function. Okay. So first of all I'll need this compare to key. So from func tools import compare to key. Okay. Now I need to write my compare. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये माई कंपेयर कैसे वर्क करता है जो आप सेपरेट फंक्शन पास करते हो ना कंपेरिजन के लिए. सो व्हाट हैपेंस इज इट हैज़ अ एरे ऑफ एलिमेंट्स. वेन एवर इट वॉन्ट्स टू कंपेयर टू एलिमेंट्स, जैसे कि आपको कम से कम एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम तो पता ही होगा जो कंपेरिजन बेस्ड होगा. सो एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉन्ट्स टू कंपेयर टू डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, एंड देन डिसाइड विच वन विल कम फर्स्ट एंड विच वन विल कम आफ्टरवर्ड्स. So whenever it wants to compare two elements, it will use this comparator function which we have passed. Are you getting my point? Now how this comparator function works? Also इसमें दो पैरामीटर आएंगे. दो पैरामीटर क्यों आएंगे? हमारे एरे में से जब भी इन्हें कोई दो एलिमेंट कंपेयर करने होंगे वो इस फंक्शन में पास करेंगे. ठीक है. Now this is the structure of how Python works. If this comparator function returns -1, then A will be before B in the final order. If this returns +1, B will be before A in the final order. If this returns 0, and if the sorting algorithm used behind the scenes is a stable sorting algorithm, then original order will be maintained. जैसा एरे में ओरिजिनली था वैसे ही रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरे में 28 और 34 पास कर दूँ एंड आई वॉन्ट टू शॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्लेस वैल्यू, then what I can do is I can calculate their units place value. So x is equal to a modulo 10, y is equal to b modulo 10. Now I can write I want in ascending order on the basis of units place value. So if x is less than y, I'll return -1. बिकॉज पाइथन क्या कहता है कि अगर आप -1 रिटर्न करोगे देन ए विल बी बिफोर ए बी, एंड एल्स आई विल रिटर्न +1. सो आई कैन ऑल्सो मेक हियर इक्वल टू साइन. ओके, और लेट्स नॉट राइट इक्वल टू साइन. ओके, दिस इज स्टिल लेफ्ट. ओके, हमने ये कंप्लीट नहीं किया है कोड. तो अब क्या होगा, अगर आप 38 और 24 पास करोगे तो इसका मॉड्यूलो 10 8 होगा, इसका मॉड्यूलो 10 4 होगा. सो इज एक्स लेस देन वाई? नो. Else if x is greater than y, then I'll return +1. Is x greater than y? 8 is greater than 4. Yes. So I'll return +1. Whenever you return +1, b will be before a in the final order. Means 24 will be before 38. On the other hand, if first parameter was 24 and second was 38, your modulo 10 would be 4, your modulo 10 would be 8. Now this is less than this, so it will return -1. When we return -1, then a will be before b in the final order. So 24 will be before 38 in the final order. So हमने यहाँ पे जो लॉजिक लिखा है, it tells the sorting algorithm to sort in ascending order on the basis of units place value. फिर चाहे कंपैरिजन में पहले 38 a इक्वल टू 38 पास हो एंड b इक्वल टू 24 पास हो, या a इक्वल टू 24 पास हो एंड b इक्वल टू 38 पास हो, फाइनल ऑर्डर 24-38 ही आएगा. Are you getting my point? Because in this case it will return +1, in this case it will return -1. So ultimately it will be 24-38 only. And else if both of these values are same, if the units place values are same, for example 28 and 38, then when do I want a to be before b? अगर units place value same है, I want to sort them in natural order. So if a is less than equal to b, अगर units place value same है, I'll compare their actual values. If a is less than equal to b, I want a to be before b. Whenever you want a to be before b, you return negative value, and else I will return positive +1. So if b is less than a, then I will return +1. So b will be before a, given that their units place value are same. So अगर a की यूनिट्स प्लेस वैल्यू b से कम है, विल रिटर्न -1. सो a विल बी बिफोर b इन द फाइनल ऑर्डर.
अगर a की यूनिट प्लेस वैल्यू b से बड़ी है विल रिटर्न +1, सो b विल बी बिफोर a इन द फाइनल ऑर्डर. अगर उनकी यूनिट प्लेस वैल्यू सेम है, then if the actual value of a is less than equal to b will return -1, so a will be before b in the final order, otherwise will return +1, b will be before a in the final order. And this is the comparator function. Okay, so what I can do here is I can say define my comparator. I can say, so let's say this is a and this is b, so I can say x is equal to a modulo 10, y is equal to b modulo 10. If x is less than y, return -1, else if x is greater than y, return +1. Else, now if their units place value are same, I want to compare them in naturally ascending order. So if a is less than b, you can also write equal to, there is no harm in that. If a is less than equal to b, return -1, else return +1. And here we pass the comparator function. So now if you execute it, so you can see we have got the output in ascending order on the basis of the units place value. But if two numbers have same units place value, then they are sorted in naturally ascending order. यहाँ पे 48-28 था, but still here we have 28-48. Are you getting my point? So that's the idea behind using the comparator function. So you can either use a lambda function or you can use a comparator function. Okay. Here also you can use a lambda function. You can search on the internet how you can use a lambda function instead of defining this whole, okay, and define the definition here. What are the possibilities, different possibilities, okay? So yeah, that's all about the comparator function. I hope आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा. Thank you.